तो गाइस फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है एंड आज हम लोग रेट करने वाले हैं हर बार्सिलोना फर्स्ट टीम प्लेयर की परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप। तो स्टार्टिंग विद रोनाल्ड अराउहो, एक भी मैच नहीं खेला, एक भी मिनट नहीं खेला उसने, तो देयर इज नथिंग टू जज रियली। तो ही गोज इनटू द डिड नॉट प्ले कैटेगरी। देन जूल्स कुंडे, आई थिंक उतना कोई एक्स्ट्रावेगेंट या नोट वर्दी परफॉर्मेंस नहीं था, बट गिवन द फैक्ट कि उसका पिछला पूरा सीजन कैसा गया था, I thought that he could have like a really devastating performance in the sense कि he could be the one player that could maybe derail France. Good for us that it didn't happen that way. It was actually the left back position जिसकी वजह से फ्रांस को सबसे ज़्यादा इश्यूज हुए एंड आई थिंक पर्सनली ही हैड अ रियली डिसेंट टूर्नामेंट। कोई बहुत ही फ्लैशी चीज़ें नहीं करी उसने, कोई असिस्ट नहीं, कोई गोल नहीं, बट आई फेल्ट दैट ही वाज प्रीटी सॉलिड along with the two center backs of France. So for that reasons I'll put him in the good category. Then comes Eric Garcia again, कोई गेम टाइम नहीं था तो आफ्टर दैट देयर कम्स गावी। सिर्फ पहला मैच खेला था, उसमें भी आउट ऑफ पोजीशन था, स्टिल आई फील लाइक ही कुड डू मोर एंड मेरा वही इशू है गावी के साथ। as much as I love the energy and passion he brings when playing for Barcelona, he doesn't have that one distinctive quality that makes him a threat to the opponent. Like at the edge of the box, let's compare him with the two attacking midfielders we have. फर्मीन के पास अगर बॉल है तो डिफेंडर्स एंड बेसिकली ओपोनेंट वुड बी scared कि he can just shoot from there and most probably he'll end up scoring. Dani Olmo के साथ है, he can really pick up a pass 1-2 खेल के either with Lamine or Rafinha or whoever will be the striker, right? But if in the same position Gavi के पास बॉल है, it doesn't really put the opposition under any kind of fear कि भाई यहाँ से शूट मार देगा या he'll just pick a pass. So I feel like he needs to up his game especially in the next season, क्योंकि हमारे पास मिडफील्डर्स की कमी नहीं है एंड लामासिया से और भी नए आ रहे हैं, टॉमस है एंड जावियर स्पार्ट भी है। द रीज़न मैं उसको अटैकिंग मिडफील्डर्स के साथ रख रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट डोंट थिंक ही फिट्स इनटू अ पिवट। सो या फॉर दैट रीज़न आई विल पुट हिम इन द कैटेगरी। पेड्री, आई थिंक हम सब नहीं, एटलीस्ट फ्रॉम बारसा फैंस, वी एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर देन व्हाट ही शोड इन दिस वर्ल्ड कप एंड इवेंचुअली उसकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हो गई थी कि डेला फुएंटे हैड टू बेंच हिम। आई एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर फ्रॉम हिम एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड विद हिज परफॉर्मेंसेज, ऑल्दो फाइनल में ही प्लेड रियली वेल व्हेन ही केम ऑफ द बेंच। सो स्टिल आई विल पुट हिम इन द कैटेगरी। डैनी ऑल्मो, सी अगेन उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं था, आई थिंक सिर्फ एक ही असिस्ट है उसका। आई फेल्ट दैट व्हेनेवर ही वाज ऑन द पिच स्पेन वर प्लेइंग बेटर फुटबॉल। गोल में भी उतने स्कोर ना कर पा रही हो टीम, बट हिज लिंक अप प्ले वाज एक्सीलेंट, वन टच पासिंग, 1-2 खेलना लमीन के साथ, मेकिंग दोज रन्स जहाँ पे लमीन देन आउटसाइड ऑफ द फुट पास देता है। तो आई थिंक ही वाज रियली गुड एंड मे बी इवन डिजर्व्ड a bit more credit than he has been getting so far. So Danny Olmo goes into the good category. Now coming to the best Barca player जो मुझे लगा इस पूरे वर्ल्ड कप में था, that is undoubtedly Pau Cubarsí. Not only was he the best young player in the entire tournament, he was the best defender, period. At no point in any game you felt like he was out of control. And itni mature performances at the age of 19, at the biggest stage of them all, for such a young player to play like that with the pressure that comes with playing for Spain and the way Spain plays, the comfort you need to play as a center back. I think he just had an amazing tournament and I just hope next season he can continue playing like that. I hope Hansi also learns a few things by watching Spain play and how Cubarsí can be partnered up with a better center back, क्योंकि स्पेन भी चढ़ के ही खेलती है बट नॉट टू द एक्सटेंट जो हांजी फ्लिक चाहता है। एंड आई फील लाइक जस्ट गिविंग द डिफेंडर्स दैट लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम कि एकदम
बिल्कुल हाफवे लाइन तक ना वो चढ़ के खेलें. आई थिंक दैट वुड make all of them thrive much more. Especially, I mean, I don't know if they are going to sign a left-footed centre back. Laporte की बात हो रही है, but let's see, he's with Athletic, तो वो भी इतना easily छोड़ेंगे नहीं अपने players, especially with what happened with Nico, right? Like easily the best Barca player in the World Cup, easily the best defender in the World Cup as well. So Pau Kubarsi goes in the outstanding category. Then comes Frankie De Jong. नहीं था यार, कुछ कुछ खास नहीं था. आई मीन नाउ वी नो व्हाई. लुकिंग एट हिज नी इंजरी, ही प्रोबब्ली रिक्वायर्स सर्जरी. सी नेदरलैंड का जो गेम है उसमें ही डजंट नेसेसरीली नीड टू बी द क्रिएटिव मिडफील्डर, राइट? ही जस्ट नीड्स टू मेक श्योर दैट द गेम कीप्स ऑन टिकिंग, टेम्पो कंट्रोल कर सके by judging what the team needs, right? And I think to some extent he did that, but still uh, उतना मज़ा नहीं आया फ्रेंकी को इस वर्ल्ड कप में खेलते हुए देख के. एंड now that we know he was playing through an injury, it makes a lot more sense. Still doesn't change the fact that he was pretty average in all the matches, so that's why he goes into the A category. Then comes Anthony Gordon, our new signing, and I think he had a really good tournament. 1 goal, 3 assists. He showed glimpses of what he will bring to this Barca team, and वो explosiveness with pace, running, pressing, सब बारसा फैंस को इसकी परफॉर्मेंस देख के काफ़ी अच्छा लगा. एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के अगेंस्ट एक गोल भी स्कोर किया. आई थिंक ही हैड अ रियली गुड टूर्नामेंट एंड आई होप दैट he can build from this when he comes to Barcelona. John Garcia, he did not play, so nothing really to judge there. See, अब our 3 main men, starting with Ferran Torres. I know he scored the winner in a World Cup final, and I mean, honestly, that is such irony in the sense कि he was absolutely dog shit. इतना गंदा परफॉर्मेंस उसका थ्रू आउट द टूर्नामेंट. लाइक इवन इफ आई इंक्लूड दैट फाइनल में उसका गोल, आई स्टिल कैन नॉट पुट हिम इन एनी अदर कैटेगरी अपार्ट फ्रॉम डॉग शिट. केप वर्डे के अगेंस्ट खाली गोल पे भी somehow he managed to hit the crossbar. I don't know how. तो see Lamine के लिए, see I am a bit confused in the sense कि from what we've seen and what we maybe expected from him, उतना अच्छा तो he definitely did not play. But still, considering the fact that he was playing after coming off a 2-month injury, maybe we can give him some benefit of that, and I'll still put him in the good category, just barely making it in. क्योंकि अगर इंजरी वाला सीन नहीं होता तो he had a really mediocre World Cup by his standard. Again, maybe for some other player who is his age and plays in his position, you would say कि बहुत बढ़िया World Cup गया है, but knowing how good he is, I think he did not have that great of a tournament, but still I'll put him in the good category just for the fact that he did come off a serious injury and was put into the thick of it straight away. And lastly, Rafinha, again dog shit performance really. I mean, कुछ 1.5 मैच खेला इसने basically, and then he got injured, and by the time he was recovered, Brazil was already out. But वो 1.5 मैच में भी बहुत बहुत बेकार परफॉर्मेंस थी रफीनिया की, एंड मे बी वी आर expecting much more of him because of how the other Barca players can link up with him. But I still think from his end, I think he gave his all in the sense he was pressing, sprinting, but still he had some really good chances and he fluffed all of them. Maybe Brazil also did not use him in the correct way, but still that doesn't change the fact that he had chances and he fluffed them. So I think it was a tournament to forget for Rafinha. We all expected much more from him, and he just
He just didn't show any quality. So yeah, this was rating FC Barcelona's Players World Cup. And let me know what you guys think. Do you agree with this or not? And I'll see you guys in the next one.